Today we will be discussing about how you're supposed to make your pattern blocks. पैटर्न ब्लॉक्स को बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट बॉडीज ड्राफ्ट आपके नोट्स के अंदर मौजूद है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये हाईलाइटेड एरिया दिखेगा। बेसिकली दिस इज़ द हाईलाइटेड एरिया दैट यू आर सपोज टू एक्सट्रैक्ट, और ये एक्सट्रैक्ट किस तरीके से किया जाएगा ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। नंबर 1, आपको फ्रंट पैटर्न, बैक का पैटर्न, स्लीव का पैटर्न, इसके अलावा आपको एक चार्ट पेपर चाहिए। नाउ दिस चार्ट पेपर कैन बी ऑफ एनी कलर बट मेक श्योर कि ये लाइट टोन में हो। यू नीड जापानीज स्केल, फ्रेंच कर्व, नॉचर। अगर आपके पास नॉचर नहीं है तो फॉर दैट यू कैन यूज सिजर्स, ट्रेसिंग व्हील, ऑल। अगर आपके पास ऑल मौजूद नहीं है तो आप उसकी जगह कंपास इस्तेमाल कर सकते हैं या पुश पिन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है ओवर हेयर। देन यू नीड अ पेंसिल, स्टील स्केल, पेपर कटर, सिजर्स एंड अ मास्किंग टेप। सबसे पहला स्टेप आपने करना ये है कि यू हैव टू टेक योर फ्रंट पैटर्न, और फ्रंट पैटर्न को आपने चार्ट शीट के ऊपर, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपने इसके ऊपर प्लेस कर दिया। मेक श्योर कि ये जो जे वाली लाइन जो है ये चार्ट के किनारे से अंदर ही हो, और आपने इसको नीचे पेपर टेप लगानी है। पेपर टेप लगाने से पहले एक चीज़ का ख्याल आप ये रखें, इफ़ यू सी ओवर हेयर, एफ पॉइंट और जो चार्ट शीट का जो एज है इनके बीच में मिनिमम आप 4 सेंटीमीटर का फासला रखें। मैंने 3.5 रखा हुआ है, लेकिन यू कैन कीप अराउंड लाइक 3.5 टू 4 सेंटीमीटर। और फिर आपने बेसिकली पेपर टेप लगा के शीट को सिक्योर कर देना है। इस तरीके से आपने इसको पेपर टेप लगा के सिक्योर कर दिया। Once your sheet is secured, तो आपने इस तरीके से ये जो ब्लू पुश पिन्स जो मैंने इंसर्ट की हुई हैं इसके अंदर, आपने इन तमाम पॉइंट्स के अंदर एक एक करके आपने, या तो आप कंपास या ऑल इस्तेमाल कर सकते हैं, या कंपास तो आपने इसके अंदर सुराख करना है। यू हैव टू यूज़ द पुश पिन नीडल सो दैट कि इस पॉइंट का निशान जो है, जो इस शीट के नीचे येलो रंग का जो चार्ट पेपर लगा हुआ है उसके ऊपर उसका पंच होल चला जाए। सिमिलरली पंच होल ओवर हेयर ऑन जी पॉइंट, ऑन ओ, पी, क्यू, के, उसके नीचे दिस पॉइंट ओवर एफ एंड देन बी। वंस यू हैव मार्क्ड ऑल दीज पंच होल्स, द नेक्स्ट स्टेप इज you are supposed to use tracing wheel. Alright, this is a tracing wheel. हम tracing wheel को यूज करेंगे हमारे जहाँ पे भी कर्व लाइंस हैं उनको ट्रेस करने के लिए। ना हाउ डज द ट्रेसिंग व्हील वर्क वो मैं आपको अभी बताता हूँ। यू कैन सी माई शीट ओवर हेयर, एंड अंडरनीथ दिस शीट आई हैव माई चार्ट पेपर। I have to trace this curve line over here. I have to trace this curve line all the way till here, and I have a curve line from R all the way till P, and I have a curve line from F all the way till the B. So what I'm going to do is I will just remove this pin over here, and I'll do my tracing work. Similarly, I'll remove these push pins from my G point and O point, and I have to do the tracing over here. Make sure the trace is coming right on line. Similarly, I'll remove the pin from P and R, and I'm going to make these lines. Again, I'm going to remove F and B pins, and I'll make this curve line over here.
and I am done. Now I will take off my push pins. Now before taking off the masking tape, first you make sure that you have all the points coming over here. Now for example, you can see this D point. Underneath this D point you can see the punch, and then we have this tracing wheel mark coming all the way over here, and I have a punch over here. For this G point I have a punch over here, and then I have this armhole line, and all the remaining punches are marked over here. Once you are sure that you have all the markings underneath, you just take off your masking tape and you can put your sheet right next to where your markings are. So let's make the first line from D all the way till the B point. It's a straight line. It's always suggested that you can have extended lines. This will help you out a bit later. Let's move on to the next step, I to G. Next we have O and P. We have K and F. K and R. So I have marked all the straight lines. For the curved lines, we're going to use the French curve. And I'm going to follow the tracing wheel line over here. And this line you can make just roughly like a curve coming inside. And a curve coming inside like this. Let's make our armhole. Like this. And then we're going to make the neckline. Now I'm done tracing my pattern. Alright, we have to make our seam allowances. इस लाइन से इस तरफ you have to take 1 centimeter of seam allowance. इस लाइन से बाहर you have to take 1.5 centimeter of seam allowance. आर्म होल के बाहर आपने 1 centimeter लेना है. साइड सीम से बाहर आपने 2 centimeter सीम अलाउंस लेना है. और ये जो नीचे वाली लाइन है यहाँ से आपने नीचे 3.5 सेंटीमीटर सीम अलाउंस लेना है. जो सेंटर फ्रंट वाली लाइन है
यहाँ से आपने इस डायरेक्शन में कोई सीम अलाउंस नहीं लेना, बिकॉज आवर पैटर्न इज कट ऑन फोल्ड। आपने करना ये है कि दिस इज अ नॉचर, ठीक है। अगर आपके पास नॉचर नहीं है तो यू कैन यूज अ सिजर्स, बट जहां जहां पे आपको डार्ट्स दिखेंगे वहां पे आपने बेसिकली नॉच क्रिएट करना है। सो आई हैव अ नॉचर, आई विल जस्ट पुट अ नॉच ऑन टू दिस पार्ट लाइक दिस। यू कैन सी ओवर हेयर कि यहाँ पे एक पंच बन गया। सिमिलरली आई एम गोइंग टू क्रिएट अ नॉच ओवर हेयर like this. So I have my two notches over here. Now for this area, ये जो एरिया थोड़ा सा बाहर आ रहा है, इसको फिनिश करने का तरीका ये है कि यू हैव टू मेक इट अपसाइड डाउन एंड रोल ऑन दिस लाइन। ये जो आपको लाइन दिख रही है, आई जस्ट शो इट टू यू, दिस लाइन यू हैव टू रोल इट लाइक दिस। वंस यू रोल इट, तो आपने इसको ऐसे उल्टा पकड़ लेना है। All what you need to do is you need to grab your scissors और इस लाइन के अकॉर्डिंगली ये जितना पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है, you just have to cut this part out like this. And your pattern is ready with seam allowances. फ्रंट ब्लॉक पैटर्न आपका तैयार हो गया है। अब आपने बैक का पैटर्न और स्लीव का पैटर्न ख़ुद से क्रिएट करना है। नाउ इफ़ यू सी ओवर हेयर, यहाँ पे तमाम एरियाज़ मार्क हुए हैं जहाँ पे आपने पंच होल करने हैं। यू कैन सी ओवर हेयर। मैं आपको बता देता हूँ आपने किस एरिया में कितना सीम अलाउंस लेना है। इस कर्व लाइन से बाहर आपने 1 सेंटीमीटर लेना है। ये लाइन और ये लाइन, इससे बाहर आपने 1.5 सेंटीमीटर लेना है। बैक का आर्म होल जो है, यू कैन सी ओवर हेयर, यहाँ पे आपने 1 सेंटीमीटर लेना है। सिमिलरली एन से लेके एम पॉइंट जो है, इससे बाहर आपने 2 सेंटीमीटर लेना है। और ये लाइन इससे बाहर आपने 3.5 सेंटीमीटर लेना है। इसके अलावा आपने एक जगह पे और सीम अलाउंस लेना है, दैट इज़ योर सेंटर बैक लाइन। फ्रॉम डी ऑल द वे टिल द बी पॉइंट आपने 2 सेंटीमीटर आउटवर्ड्स इस डायरेक्शन में आपने सीम अलाउंस लेना है। लेट्स मूव ऑन टू द स्लीव। नाउ यू कैन सी यहाँ पे भी सारे पंच होल्स हुए हैं, मैंने मार्क किए हुए हैं। ओवर हेयर ये जो कर्व लाइन आपको आर्म होल की दिख रही है, इससे बाहर आपने 1 सेंटीमीटर लेना है। ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है, फ्रॉम F टू S एंड फ्रॉम S टू X, इस लाइन से बाहर आपने 2 सेंटीमीटर लेना है।
इसी तरीके से आपने ये वाली लाइन H से R और U से W आउटवर्ड्स आपने 2 सेंटीमीटर सीम अलाउंस लेना है और W टू X से बाहर आपने 3.5 सेंटीमीटर लेना है। आपके पैटर्न्स जब तैयार हो जाएं तो आपने उनको कट नहीं करना, आपने पहले मुझसे कंसल्ट करना है। थैंक यू सो मच।